Good morning, dear viewers. This is Sukhvinder. Since और for दोनों का यूज बेसिक्स फॉर लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट के लिए कैसे किया जाए ये आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे. So please subscribe and share the channel so that things work for all of you. So let us start with the first. We will be learning how to use since. तो since जो आपका प्रपोजिशन है ये रेफर करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम को. वी यूज सिंस टू रेफर टू अ पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस कैन रेफर टू अ पॉइंट after a specific time or event in the past, or it can refer to a particular point beginning sometime in the past and continuing until the present time. The particular point in time could be anything. So मोटी बात हमें ये समझ आ रही है कि since का हम जब भी यूज करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसका यूज करते हैं. इसको हम एग्जाम्पल से आगे समझेंगे. So first we will try to understand what is the use of since. Since जैसे मैंने आपको बताया कि एक particular point in time पर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं. So since is used with a particular point in time, इस बात को आपको याद रखना है. What does it do? Since gives the starting point of actions. कोई भी जो action mention है sentence में वो किस वक्त शुरू हुआ इसके बारे में बात करता है. Actions के बारे में बात करता है, events के बारे में बात करता है और states के बारे में. It refers to when things began. So the basic formula for using since is this. Since plus a particular point in time. जैसे I have been waiting since 7 o'clock. तो यहाँ पे 7 o'clock जो है ये एक particular point of time है. ये टाइम क्लॉक पे एक पर्टिकुलर टाइम है इसलिए इसके साथ हमने since इस्तेमाल किया. I have known him since January. Now, January is a month in the calendar, so it is a particular point of time. So, therefore, we are using since over here. Let's proceed. Now, since used as, with since we use the present perfect tense or past perfect tense. I have been here since 5 o'clock and I am getting tired. I had been working since 5 o'clock and I was getting tired. तो यहाँ पे जब had been आपका past perfect tense यूज हुआ है तो यहाँ पे हमने I was getting tired इसको helping verb को change किया है. Same here. I have been here since 5 o'clock and I am getting tired. तो ये है present perfect tense. I have been here. तो इसके साथ since यूज कर रहे हैं क्योंकि 5 o'clock एक point of time है और इसके साथ हम present continuous का verb यूज कर रहे हैं. I am getting tired. Since we can also be used, it can be used in the structure. It has been plus period of time plus since. ये मैंने highlight इसलिए किया है ताकि आपको इसको clear समझ आए कि हमको आपको इस बात पर ही ध्यान देना है. So it has been 2 months since I last saw her. It has been 3 years since the last earthquake. तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम इसको इट हैज बीन स्ट्रक्चर में प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज करते हैं. तो यहाँ पे हैज बीन स्ट्रक्चर आ गया आपका और दोनों में एक पॉइंट ऑफ टाइम है. यहाँ पे 2 months, यहाँ पे 3 years since I last saw her. Now, in sentences with since, we usually use perfect tenses. When using since, we normally use present perfect and past perfect tenses in the main clause of the sentence. तो जो main clause है उसमें present perfect और past perfect tense use किया जाता है. उसके साथ ही हम since word, since preposition use करेंगे. You wouldn't use since
when you are talking about the future, because by definition since refers to specific point in the past. क्योंकि जो since है वो एक specific point past में के बारे में रेफर कर रहा है, तो हम future tense के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे. Now let's see where we use for. क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो since और for, इसका अलग अलग इस्तेमाल है, दोनों टाइम से रिलेटेड है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है और एक पीरियड ऑफ टाइम से. तो यहाँ पे इन इंग्लिश वी यूज द preposition for to talk about an amount of time or space. The amount of time could be seconds, minutes, hours, days, months, or even years. The amount of time does not need to be exact. You could use for when you're talking about vague periods of time. ये ध्यान रखना है आपको, vague periods of time. Like for the weekend. Now which weekend? You don't know. For ages. Which, how many ages? Okay. And or for a long time. कौन सा समय का हिस्सा है जिस हिस्से के बारे में ये बात हो रही है. तो इसलिए ये वेग पीरियड ऑफ टाइम है जो श्योर नहीं है, लेकिन ये एक पीरियड ऑफ टाइम से को मेंशन करता है और उसके साथ इसको हम यूज करते हैं. The important point is that for is used to specify a period of time. ये भी मैंने हाइलाइटर लगा दिया इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए. In English, the basic formula for using for is for plus a period of time. जैसे हमने उसमें since में देखा था, for a point of time, यहाँ पे a period of time. Now you can use for and since with similar verb tenses if you wish. Here are two examples. I have been walking for 5 hours. 5 hours. I have been walking since 10 p.m. तो यहाँ पे भी आपने एक ही वर्ब टेंस के साथ आपने for और since दोनों को यूज किया, लेकिन यहाँ पे for 5 hours, यहाँ पे 10 p.m. है. तो 10 p.m. is point of time. 5 hours, you don't know which 5 hours. 5 o'clock है या 4 o'clock है या 3 o'clock है, ये कब से. ठीक है. We have lived here for 20 years. कौन से 20 साल रहे आप? 1901 से लेके 1920 तक या कब किसी और 20 years में. यहाँ पे we have lived here since 1985. अब 1985 से आपको एक point of time मिला है, इसलिए हम इसके साथ since यूज करेंगे. यहाँ पे हमें आप point of time नहीं है, सिर्फ period of time है, तो हम for यूज करेंगे. Now for can be used when talking about the past, present or future. Here are three example sentences that use similar vocabulary but use different verb tenses. Like past, last year I traveled for 3 weeks. Present continuous, I am traveling for 3 weeks. Future, next year I will travel for 3 weeks. तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि हम past, present और future तीनों में यूज कर सकते हैं, और since जो है वो हम परफेक्ट कंडीशंस में यूज कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे हम एक मैंने आपको छोटा सा डायग्राम एक शेयर किया है. आई हैव डाउनलोडेड एंड दिस टॉक्स अबाउट अ ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन since and for. Now since is starting point and continues until now. For is duration of time. Like for 4 years since 2012. I have been living in Japan for 4 years. Which 4 years? You don't know. I have been living in Japan since 2012. तो ये एक point of time है, ये आपका period of time है for 4 years. So let us further continue. Um, for is used with period of time plus number plus time word, and since is used with starting point, a time, a date. Okay. When we measure the duration of something or how long it lasts, it has a start point and an end point and can be used in different tenses. Now for since, when something started in the past and continues until now, since is mostly used in the present perfect and perfect progressive tense. Okay. यहाँ पे examples हैं for के use के. I studied English in Ireland for 20 years. यहाँ पे I will be there for around 2 months. आप clear देख रहे हैं कि एक period of time है, उसको उसके साथ हम
for यूज करें. We have been married for 14 years. यहाँ पे since के examples देख लीजिए आप. He hasn't eaten since 7 o'clock. I have been working here since June. We have been married since 2002. Now here are some examples कि जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो क्या फ्रेज यूज होता है, किसके साथ हम यूज करते हैं, और ऐसे ही जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो क्या यूज करेंगे. जैसे यहाँ पे फॉर 10 minutes, यहाँ पे सिंस 8 o'clock. फॉर 8 hours, सिंस मंडे. फॉर 5 days, सिंस February. For 6 months, since 1982. For 3 years, since I left school. For 2 centuries, since the end of last centuries. So, dear students, I hope your concept for use of since and for must be clear by now. और बहुत सारे एक्सरसाइज हैं इसके इस पर बेस्ड नेट में. इतनी इस वीडियो को देखने के बाद आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to work with that set of questions, and I'll try to send you one link also for doing exercises based on use of since and for. So I'll be very much pleased if you please subscribe, share and like the channel. Thank you very much. God bless you all.